Now I'll share the screen now. Screen is visible to all. So in the yesterday's class, we have discussed regarding the different types of materials of the patterns as well as the function of the patterns and the material used for the patterns and different types of patterns. Okay, the sweep pattern, skeleton pattern, match split pattern, as well as the split pattern, and the single piece pattern. Okay, so today we are going to discuss an important topic that is called as an pattern allowances. So see, it is a very important concept. Okay, pattern allowances. The fixed question asked in the examination: what are the different types of pattern allowances? So, what do you mean by the allowances? So, see, in the simple concepts, I will like to explain you what is the allowance. Okay, uh, my voice is audible, no? Okay, oh, can you see the screen now? What you can see the screen? Hmm. Okay, uh, sorry. So, what is the allowances and why the patterns are required allowances? This is an important concept that you have to understand and that we are going to study today. So, see, there are so many different types of allowances given for the pattern while making the pattern or designing the patterns. Okay, these are the very important allowances that has to be consideration while making the pattern. Now you can see the different pattern allowances. First one is an shrinkage allowance, second one is an machining allowance, third one is in draft allowance, and fourth one is in distortion allowance. So these are the four important allowances which has to be considered while making the pattern and designing the pattern. Before taking a design of any pattern, this allowance has to be kept into consideration, and while making the pattern also this allowances has to be kept into consideration. Now before going for these allowances of a pattern, I will like to give a simple example. Okay, why the allowance are required for the patterns. Okay, so see, in when you are in a childhood, okay, the from first standard to the 10th or a ninth standard up to the 10th or the PUC second, if you take a consideration, so that is the age of an 15 16. Okay, up to the 15 16 age, 14 to 16 age. So this is the age limit where the growth of the each and every children's has been increases. Okay, the height growth is been increases according to the height growth or the standards in which you are studying. Okay, as per the age, the what your parents has been done. Okay, when you go for the having an clothes, if you take an example of a jeans pant or the shirts, so they never take, you all also have experienced the same thing, they never takes the same size of your uh, height. Okay, the clothes, okay, the extra some 4 or 5 inch extra length pant is been taken or extra length shirt is been taken, may the shirt be taken as a fitting, but the pant is been some extra length they have been taking. Why? Because if you purchase a pant for the at the
at that age, or on that standard, or the 6 or 7 standard, so at least it may go for the 1 or 2 years. Okay, so these are the common middle class people has to do usually. Okay, even my parents also have done the same thing. When I was a childhood, so I have to take a pant, and okay, that pant has to be fold 2 or 3 times. It has been fold and it has been stitched according to the height. Everyone have experience. So what is that? That is nothing but the pant has given the extra allowances, so that the how your height is growing, your length of your body is been increasing, how it, so that one fold if you remove, so that 2 or 3 inch the pant will be extended. The same pant can be work out for a 2 or 3 years by removing that fold of the stitches, so the length of that pant is been increases. So this is how the folding of an pant, the parents or the stitcher who is stitching your tailor who is stitching your pant, okay, he gives an allowance to that pant, extra material to that pant, so that allowance, that is nothing but an extra material to the pant, so that it can increase. Okay, it can be used in the future also. So this is what the simple allowance method is there. Okay, so that you have to understand. Okay, now first we will go for the shrinkage allowance. So what is the shrinkage allowance? So see, each and every material. Oh, it has gone. Can you see the screen now? The screen is visible. The shrinkage allowance, machining allowance, and draft allowance is there. Is the same page is there? Page number 15. Okay. Shrinkage allowance, machining allowance, and the draft allowance. Okay. Now, before going to this allowances, you have to understand what is the shrinkage, what is the machining, and what is the draft, and what is the distortion. Okay, so I will like to explain you. So see, what is the shrinkage? In the previous class also I have explained the regarding the shrinkage. For example, this is what a round circle is there. I will take a red color. This is a round circle is there, in which you are pouring a liquid metal. Okay, take an example. If you are pouring a liquid metal, the liquid metal is in red hot condition. Okay, red in color as well as hot within high temperature. Okay, if it is pour over here, then after few times or a few seconds, few hours, according to that particular metal solidification time, it starts to convert a solid. Okay, from liquid it converts to solid. At that moment, what happens? The size of that mold cavity, okay, the size of that mold cavity is been, sorry, uh, this is the this is a liquid metal. Okay, then when it starts to solidify, now you can see this is a solid metal. Okay, you can see, can you see that I am doing the marking on the screen? It is visible on your screen also. Okay, there are two circles are there, one is in red color and one is in blue color. Okay, so in these two circles you can see this is a liquid metal is there, which is poured into a mold cavity. Okay, which is in the liquid form. Hmm? When it starts to solidified, okay, then what happens? When it starts to solidify, it starts to contracts means what, the shape and the size starts to reduce over there. Okay, so
over here it converted into one small size. So the difference between this both the circle is called as an shrinkage amount. Okay, the shrinkage amount that is been made. Okay, that extra amount of that size of that material is been made into an shrinkage to that pattern, that is called as a shrinkage allowance. Okay, so you have understand this is shrinkage. Now I will explain how the shrinkage allowance is given to the pattern. Okay, for example, just imagine this is a pattern. This is a pattern is there. Okay, the size of this pattern is 20 mm. Okay, and from over here also you can take 10 mm. Okay, now we want a casting square box. This is what the casting square box we want. So its size is 15 mm and over here 5 mm. Okay, now the pattern is of 20 mm and from the side it is 10 mm, from at the top it is 20 mm, but we want the accurate casting figure is of 15 mm and 5 mm. So what is different over here? Over here the 5 mm extra material is been given, and over this side also 5 mm extra material is been given. Once you pour the molten metal into this mold cavity, okay, so at that moment what happens, the extra material is been poured in that one, in that mold cavity. Even though it undergoes for the shrinkage effect, okay, then also we can get the exact 15 mm and 5 mm dimensional block of an casting. Okay, understood? So this is what the shrinkage is called. So see, for example, I will like to tell, if you are in a daily basis, if you have seen the what you can say, uh, have you seen the papad making process in your home? Huh? ಪಾಪಡ್ ಹಪ್ಪಳ ಅದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪಾಪಡ್ ಕಸ करतात. Yeah, it has been what you can say, round shape it has been given, then afterwards it has been kept on an uh, open space where due to the sun rays or the heat the moisture is been removed out. Okay, then afterwards जसं जसं तुम्ही उन्हात ठेवता त्याला तसं तसं ते सुकत जातंय पापड. बघितलाय ना? हॅव यू सीन नो? ದ ಹೆಂಗ್ ಬಿಸ್ಲಾಗ ಇಡ್ತೀರಿ ಹಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹಾಕೋತ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅದು. ಓಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ shrinkage. Shrinkage from original size it is been starts to shrink over there. The shape is been reduced over there. So this is one of the simple example, and any other example of the shrinkage. Uh, any another example? Anybody knows how the shrinkage for daily uses? Can anyone give any example? Are you there or not? And gone. Rishikesh, uh, uh, can you give me any example of the shrinkage? Anybody? Anyone? Those who have joined, any simple example in your home or anywhere? Have you seen the tree leaves? Tree leaves, झाडांची पानं बघितलं, पेड़ के पत्ते. Have you seen? No. When it is been fresh, the size of that leaves is very stronger one. When it cut from the tree branch, when it falls down, so at that moment what happened? The size of that leaf
हाँ, पेड़ के पत्ते का साइज जो है वो कम होते जाता है, कॉन्ट्रास्ट होते जाता है, छोटा होते जाता है. Is it or not? Why? Because the moisture from that leaf is been removed out. So that thing is called as in shrinkaging. Understand or not? What is the shrinkage? Huh? Okay. So that is what the shrinkage. For that, so that is what the shrinkage is there. Okay. Once again, I will tell you. Just for example, this is a vessel in which you are pouring a liquid molten metal. Okay, just imagine this is a 15 and this is a 10 mm. Okay, then when you remove from this liquid molten metal, when it gets shrinkage, the size is been reduced, it will be the 10 or 8. Okay, so the shape and size has been reduced when it starts to solidified over there. So this is what the shrinkage. Okay, that is called as a shrinkage. For to avoid this shrinkage allowance, okay, so the pattern size is already made a bigger one. Okay, so that even though the liquid metal starts to shrink over there, then even though the liquid metal starts to shrink over there during the solidification, it can retains its required position. Okay, for example, see, if you want a 10 or a 8 or 9 or 7, 9, you can take it as an 8 or 7. Okay, size accurate. If the pattern is made of the same size, okay, if the pattern is made of the same size, so what will happen? Thus this will be the 7 and the 8. It is, this is what the finished product you want, that is the 7 and the 8 mm size. Okay, this is from this to this 7 and from this to this is an 8. द फिनिश प्रोडक्ट, अगर आपको फिनिश प्रोडक्ट 7 और 8 का चाहिए, उसी साइज का अगर आपने पैटर्न रेडी किया, तो क्या होगा? व्हेन यू पोर द मोल्टन मेटल, आप जब मोल्टन मेटल उसमें पोर करोगे, पोर करने के बाद व्हाट विल हैपन, वो और कम हो जाएगा साइज में. जैसे जैसे सॉलिडिफाइड होते जाता है, वैसे वैसे उसका साइज कम होते जाता है. अगर उसका साइज कम होते गया, तो आपका जो रिक्वायरमेंट साइज है 7 और 8 का, उस साइज में आपको कास्टिंग का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. इसीलिए पैटर्न बनाते समय पैटर्न को थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, जिस कारण अगर वो कॉन्ट्रास्ट हुआ, उसका साइज कम हुआ, तो भी एक्चुअल साइज के प्रोडक्ट में कास्टिंग आपको मिल जाएगा. सो उस एक्स्ट्रा मटेरियल को जो ऐड करते हैं पैटर्न में, उसको अलाउंस बोलते हैं. सो श्रिंकेज के लिए कितना मटेरियल श्रिंक होने वाला है, उस हिसाब से उसको एक्स्ट्रा मटेरियल बना के पैटर्न रेडी करते हैं. उस मटेरियल को श्रिंकेज अलाउंस करके बोलते हैं. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज द मशीनिंग अलाउंस. सो व्हाट इज द मशीनिंग अलाउंस? सो मशीनिंग अलाउंस मतलब क्या? मशीनिंग, अगर कास्टिंग निकालने के बाद कास्टिंग रफ रहता है, रफ होने के कारण उसके ऊपर पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, देर आर सो मेनी डिफरंट मशीनिंग ऑपरेशन हॅज टू बी कॅरिड. त्याच्यावरती वेगवेगळे ऑपरेशन्स करावे लागतात. ड्रिलिंग करावे लागतं, मशीनिंग करावं लागतं, थ्रेड कटिंग असेल, फेसिंग ऑपरेशन असेल, ग्राइंडिंग असेल, फिनिशिंग असेल. सो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन उसके ऊपर करने पड़ते हैं. मशीनिंग करना पड़ता है, कास्टिंग होने के बाद पॉलिशिंग रहने दो, मिलिंग रहने दो, थ्रेडिंग कर सकते हैं, और डिफरेंट एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मशीनिंग के ऑपरेशन करने पड़ते हैं कास्टिंग के ऊपर. सो मशीनिंग मतलब क्या? एक्स्ट्रा मटेरियल रिमूव करने का, एक्सेस मटेरियल रिमूव करने का, उसके ऊपर से मटेरियल जाने वाला है. इसीलिए और एक अलाउंस, अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल और थोड़ा ऐड करते हैं. किसको? पैटर्न को. क्या बाबा, एक 3 mm एक्स्ट्रा मटेरियल रखो जो मशीनिंग के ऊपर छाट जाएगा, निकल जाएगा, तो अपने को एक्यूरेट डायमेंशन का कास्टिंग मिलेगा. सो उसे एक अलाउंस, मशीनिंग अलाउंस करके बोलते हैं. ओके, अंडरस्टूड. और नेक्स्ट
ड्राफ्ट अलाउंस। ड्राफ्ट अलाउंस मतलब क्या? ड्राफ्ट अलाउंस मतलब अगर, एक मिनट में बताता हूँ आपको। ये मोल्डिंग बॉक्स है। इस मोल्डिंग बॉक्स में अगर आपने इस तरह से एक स्क्वायर पैटर्न अंदर डाल दिया, इस स्क्वायर पैटर्न को सैंड पूरा रैम करने के बाद निकालना पड़ता है। जब इस पैटर्न को आप निकालते हो तो थोड़ा सा उसको शेक करना पड़ता है, और नहीं तो थोड़ा सा ऐसा उसको हिला के ऐसा रिमूव करना पड़ता है। तो जब आप पैटर्न रिमूव करते हो उस समय पैटर्न थोड़ा सा कैविटी को एक्सपांड करता है। अगर इस पैटर्न को रिमूव करने के बाद आपको कैसा दिखेगा कैविटी, कुछ इस तरह से आपको कैविटी मिल जाएगा। सो इस कैविटी कैविटी जो होल पड़ता है, जो खड्डा गिरता है उसके ऊपर, जो पैटर्न का इमेज से जो हॉलो पार्ट तैयार होता है, ओके, उसको थोड़ा निकालते, पैटर्न निकालते समय, पैटर्न जब आप वहां से बाहर निकालते हो उस समय क्या होता है, थोड़ा कैविटी थोड़ा एनलार्ज होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो उस हिसाब से उसमें पैटर्न में थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करके, तो जब आप मोल्टन मेटल पोर करेंगे तो तभी उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड होने से भी कास्टिंग को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए ड्राफ्ट अलाउंस करके उसे बोलते हैं। ड्राफ्ट मीन्स व्हाट? जब when you are going to remove the pattern from the molding box, okay, at that moment what happens, the pattern may shake over there, or the cavity may be increased over there. For that reason the draft is been given. Okay, now next, the distortion allowance. Distortion allowance means what? The distortions occurs in the casting. अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल बता दूं तो डिस्टॉर्शन मतलब क्या? अ, अ, एक लकड़ी आपने अगर लिया, एक लकड़ी का एक ड्राई प्ले, सॉरी, वेट वुड, वेट वुड और ड्राई वुड, सूखा एक लकड़ी, और एक गीली लकड़ी। अगर गीली लकड़ी अगर आपने कट की, गीली लकड़ी अगर आपने कट करके कुछ तो फर्नीचर, नहीं तो कुछ तो इमीडिएटली गीली लकड़ी को यूज करके आपने कुछ तो बनाया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, थोड़े दिनों के बाद उसमें से जैसा जैसे मॉइस्चर कंटेंट, पानी जो लकड़ी में रहता है, जैसे जैसे निकलते जाता है, जैसे जैसे लकड़ी सूखते जाती है, वैसे वैसे उस लकड़ी का शेप थोड़ा चेंज होते जाता है। ओके, हैव यू आई थिंक यू ऑल हैव एक्सपीरियंस। ओके, उस लकड़ी का शेप चेंज होते जाता है, जैसे जैसे वो सूखती जाती है लकड़ी, उसका शेप चेंज हो जाता है। सेम वैसे ही जैसे जैसे कास्टिंग लिक्विड से सॉलिड होते जाता है, उसका स्लाइटली थोड़ा सा शेप चेंज होते जाता है। ओके, सेम थिंग अगर आपने अगर डेली यूजेस में आपने देखा होगा, घर में अगर इस टाइम पे जो पिकल्स बनाते हैं, सुखाते हैं, जो सुखाते हैं छत के ऊपर, खाने का प्रोडक्ट कुछ भी ले लीजिए, अगर आम सुखाओ, नहीं तो जो पापड्स घर में बनाते हैं मम्मी आपके, तो आपने देखा रहेगा जो सूख, जैसे जैसे वो सूखते जाता है उसको वैसे वैसे उसका शेप थोड़ा चेंज होते जाता है। सो दैट thing is called as a distortion. Okay, distortions. Okay, I hope you are understanding that changing of its shapes during the solidification is called as a distortion. For example, अगर इस शेप का अगर कास्टिंग इनिशियली रहेगा, जब आपने पोर किया रहेगा मोल्टन मेटल, जैसे जैसे वो सॉलिडिफाइड होते जाता है उसका शेप कुछ इस तरह से, नहीं तो कुछ ऐसा बैक साइड पे थोड़ा शेप स्लाइटली उसका चेंज होते जाता है, उसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी श्रिंकेज अलाउंस। आप देख सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ग्रे कास्ट एंड श्रिंक कितना होता है, 6.95 टू 10.4 mm तक उसको श्रिंक होता है, मतलब उसका कॉन्ट्रास्ट होता है, कम होता है साइज उसका। स्टील का 20.8 mm पर मीटर हो सकता है,
एल्यूमिनियम 17 हो सकता है, एल्यूमिनियम अलॉय 12 to 15 हो सकता है, मैग्नीशियम 17 हो सकता है, ब्रॉन्ज 10 to 20 हो सकता है. So this is what the some theoretical size are been given or the chart is given. As per this chart, okay, each and every material having its shrinkage. सभी मटेरियल का एक एक स्टैंडर्ड साइज रहता है, श्रिंकेज का साइज रहता है, उस हिसाब से पैटर्न रेडी किया जाता है. अगर आप स्टील यूज करने वाले हो तो एक 20 का एक्स्ट्रा अलाउंस पैटर्न को देना पड़ता है. ओके, सो दिस इज हाउ द अलाउंसेस आर देयर. एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. सो सी, दिस इज व्हाट द इनिशियल साइज इज देयर. अगर इसको आप 7 लेंगे और इसको आप 6 लेंगे, तो अभी इसको एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करके श्रिंकेज अलाउंस देने का पैटर्न को. ओके, सो यहाँ पे कितना दिया हमने, एक 2 इंक्रीज किया, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करके यहाँ पे मशीनिंग देंगे 2 सो फिर ड्राफ्ट अलाउंस एक 2 ओके, सॉरी, एक अलग अलग कलर दिखाता हूँ फिर आपको पता चलेगा उसको. सो दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ द पैटर्न व्हाट यू हैव रिक्वायर्ड. नाउ दिस इज द श्रिंकेज अलाउंस दिया हमने अभी उसको 2 एक्स्ट्रा मटेरियल. फिर बाद में हम देने वाले हैं मशीनिंग अलाउंस. So this is what the machining allowance by the 2 Now I am giving a draft allowance. ये दिया हमने ड्राफ्ट अलाउंस. अभी हम देंगे डिस्ट्रॉशन अलाउंस. ये जो आया अभी डिस्ट्रॉशन अलाउंस. अभी सभी एक एक 2 2 सो टोटल हमने दिया 8 एक्स्ट्रा मटेरियल फॉर द पैटर्न. ओके, हमें 6 अभी टोटल कास्टिंग 7 का था, अभी उसको 8 7 प्लस 8 हाउ मच 7 7 14 एंड 16 एक्स्ट्रा 16 का टोटल पैटर्न हमने अभी रेडी किया. सो दिस इज व्हाट द 16 सो श्रिंकेज अलाउंस में थोड़ा सॉरी, श्रिंकेज अलाउंस में 2 कट हो जाएगा, मशीनिंग अलाउंस में 2 कट हो जाएगा, ड्राफ्ट अलाउंस में 2 कट हो जाएगा, डिस्टॉर्शन अलाउंस में 2 कट हो जाएगा. फाइनली विल गेट द 7 casting perfectly for the use. So this is what the allowances are there. Okay, now machining allowance is finished. Now you can see over here मशीनिंग अलाउंस आप इस डायग्राम में दे सकते हो. ड्राफ्ट अलाउंस किस लिए दिया जाता है, अगर ये पैटर्न है इस मोल्डिंग बॉक्स से अगर इसको निकालना हो बाहर, सो देखिए आप अगर इसको मोल्डिंग बॉक्स से बाहर निकालते समय मोल्डिंग बॉक्स से निकालते समय यहाँ पे थोड़ा सा कैविटी कट होने के चांसेस रहते हैं, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. ओके, सो अगर उसको ड्राफ्ट पैटर्न को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे दिया है, देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल दिया हुआ है, उस एक्स्ट्रा मटेरियल को आपने दिया तो कास्टिंग जो है पैटर्न जो है इस बॉक्स में से इजीली बाहर निकल सकता है. इसीलिए ड्राफ्ट अलाउंस देना जरूरी है पैटर्न को. द ड्राफ्ट और द टेपर अलाउंस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द टेपर added to an vertical long face of the pattern to facilitate so it easily removed from the mold without damaging to the mold cavity. So this is how the pattern has been removed out from this mold cavity. I hope you are understanding this. Now next you can see distortion over here. देखो distortion allowance. So यहाँ पे the distortion allowance is provided to those pattern from which the casting produce may have a tendency to distortion during the
cooling due to a thermal stresses developed. For example, casting in a U shape. So see, ये पैटर्न U शेप का है. हाँ, कास्टिंग निकालते समय इसको डिस्टॉर्शन कास्टिंग देखो, उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया है. So the pattern is initially distorted, so the desired casting without distorting you can get. Okay, so while considering a close and on a cooling will open and remain the fixed in the position. The distortion for such a casting can be eliminated by providing the allowance and the constructing pattern initially distort so that the casting after cooling neutralize and initially distortion given to the pattern as shown in figure. So देखो यहाँ पे what is the what is been done during distortion alone. ये दो डायग्राम है. प्लीज अंडरस्टैंड देर आर टू डायग्राम्स आर देर. एक में देखिए आप यहाँ पे पैटर्न जो है पूरा स्ट्रेट है. जो पैटर्न इस पैटर्न से अगर कास्टिंग निकालने के बाद इस तरह डिस्टॉर्शन होता है, उसका उसका थोड़ा सा शेप चेंज होता है. अभी उन डिस्टॉर्शन अलाउंस में क्या होता है, पैटर्न को थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा टेढ़ा करके पैटर्न रेडी करते हैं. अगर डिस्टॉर्शन कास्टिंग में अकर हुआ तो भी वो उस ओरिजिनल पोजीशन में आके रुक जाएगा. सो थोड़ा सा पैटर्न को इनिशियली ना थोड़ा सा बेंड और थोड़ा इंक्लाइन करके पैटर्न रेडी करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज एन डिस्टॉर्शन अलाउंस. ओके, नाउ नेक्स्ट we'll go for the introduction to the sand molding. So what is the sand? The sand which is used for making the casting. Okay, for making the mold cavities, for making the cores that you are going to study now. Okay, so these are the introduction to the sand of mold. Okay, the types of sand, the silica sand is there. Okay, olivine sand is there, chromite sand is there, zinc sand is there, and you can see over here the requirement properties of the base sand and then the binders are being used. So before going to this type of sand, okay, I will like to tell you what are the sands are there. So see the silica sand, the green sand, and there are so many different types of sands are being used in the foundry. So before going to this types of sands and the property, uh, I will like to tell some important thing regarding the sand. The sand has to undergo some severe sand testing phenomena are there. Okay, in which for your foundry forging lab for this semester there are 8 to 9 experiments are there which are conducted on the foundry sand. Okay, for checking the strength, okay, of that sand, compression strength of that sand, shear strength of that sand. ओके, देन उसके बाद में उसका परमेबिलिटी टेस्ट चेक करना पड़ता है. व्हाट इज द परमेबिलिटी टेस्ट? द परमेबिलिटी इज नथिंग बट द सैंड के अंदर से गैस पास की जाती है और उसको एक स्पेसिमन बनाते हैं, उसका एक वर्कपीस बनाते हैं सैंड का, उसमें से गैस पास होने की एबिलिटी चेक करते हैं. अगर उसमें से गैस पास हुआ तो उसका परमेबिलिटी नंबर आता है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाइड. ओके, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. और सैंड जो यूज करते हैं उसमें क्ले कंटेंट कितना है, मिट्टी कितनी है, वो भी चेक करते हैं हम सैंड टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स में. फाउंड्री एंड फोर्जिंग सैंड टेस्टिंग जब करते हैं तभी. सो कोर हार्डनेस टेस्ट इज देयर, मोल्ड हार्डनेस टेस्ट, इससे जिस सैंड से मोल्ड रेडी करते हैं उसका हार्डनेस कितना रहता है वो भी हमें चेक करना पड़ता है. So these are the different varieties of the test are been conducted before taking that sand for the casting purposes. Okay, और अभी उसके प्रॉपर्टीज में आप पढ़ेंगे सभी. So the green sand is the most popular sand that is also called as a silica sand.
which has been used for making an mold cavities in the most probably in the industries. So what is the green sand? So see the name, it is called as a green sand, but it is not. If you go the color wise, this sand is not in a green color, it is in completely black color. Black color sand it is, okay, because there are so many additives and the binders are being added in that sand to get the strength of that sand, okay. So why it is called as an green sand? So it is a very important question whenever we go for the vivas or any oral questions. The any of the examiner can ask you this same question. So it is a black sand. Why it is called as a green sand? Because it contains the moisture. The green indicates that water particles, there is a water area, okay. Like this way only, that sand which is been used, that is been always in an wet wet condition, always having a dry, so the always the moisture is contained in that sand, okay. So that is why it is called as a green sand. Now there are so many additives and the binders are being added. Sorry. So what is an additive and what is the binder? If you there are two different things are there. By mixing both the things, one by mixing both the additives and binder, then only you get the proper composition of an sand. So what is an additive and what is a binder? This both are the having a different meaning and different components of the substance, okay. Additives and the binder. What is an additive? Additive is nothing but an adding some extra material. Binder is nothing but a solution or a liquid or any of the thing that binds, that joins the additives and the main core substance. So this is the difference between the additive and binder that you have to understand. If you take an example of the cement concrete, the cement and the small pellet stones, okay, and the sand, these are the additives which are going to mix, okay. Then water and the liquid solution, waterproof solution, that is called as a binder, okay. When you add the water, then only it is going to mix, otherwise it is not going to mix over there, okay. Like this way the binder is different and the additive is different. So this the molding sand which has been used, okay, over there the different types of additives and binders are being added to get the perfect combination of an mold, okay. High strength mold, okay, hardness mold, which is which can withstand the compression strength as well as the tensile strength, okay, and hardness strength, and having the permeability strength also. So this all the things we are going to study in this sand uh, e- testing, okay. So in the next class we continue with the different types of sands and what are the additives and the binders are being added, which are the ingredients are being added in that sand, so that the mold cavity can get the strength, okay. So I will conclude the today's class over here only. I hope you have understand. So whatever the concept I have tried to explain, if you are having any doubts, you can ask me. Anybody having any doubts? If you are having any doubts, you can ask me. No doubts regarding the allowances? Huh? Okay. Okay. So today this class will be will end over here. In the 1 o'clock class, we will continue with the triple M. So see, today evening I will take out 5 o'clock, 5 or 6 o'clock. I will postpone this 1 o'clock class to a evening 5 or 6. I will share the link over here, Zoom link. Either I can take on the 5 o'clock or 6 o'clock class. Okay.